Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with a bunch of topics to discuss. But before starting, I just want to convey information that we have launched various number of courses, and to get the notification of all such number of courses, offers as well as programs, do join the WhatsApp group which is directly in the link given below. And also you were suggested to join the Telegram channel so as to get the PDF of this analysis. So do join the free WhatsApp group as well as the Telegram group for various updates related to our particular organizations. Now, let's start with today's analysis. The first topic says about Shanghai Cooperation Organization's anti-terror exercise. So when I see about this exercise, the recently concluded Shanghai Cooperation Organization Summit. Okay, so it is directly this exercise under the framework of SCO, which is the regional anti-terrorist structures. So now India is currently hosting the multilateral anti-terror exercise, which is known as Manesar Anti-Terror 2022, scheduled from October 8 to October 13. Okay, so अभी यहाँ पे क्यों न्यूज में है? Because Pakistan to take part in the closing ceremony of SCO anti-terror exercise hosted by India. तो ये जो exercise है, ये exercise it's a stage 2 of the exercise, and the stage 1 is already held and was conducted from July 27 to August 1 by the national counter-terrorist forces of SCO member countries in their respective territories. This exercise, that is the anti-terror exercise, aimed at exchanging expertise, best practices, and build synergy. Synergy मतलब एक cooperation between the counter-terrorism forces of the SCO RATS member countries. तो ये RATS मैंने क्या बोला था? Regional anti-terrorist structures. ठीक है? तो this member countries, which aims at exchanging expertise, now they will enhance capabilities for conducting every form of operations and countering other security threats collectively. Okay, so ये जो regional anti-terrorist structure है, it is one of the permanent organ of the Shanghai Cooperation Organization with its headquarters at Tashkent in Uzbekistan. And the main objective of this SCO RATS is to facilitate cooperation and coordination against terrorism, extremism, as well as separatism tendency. Okay, and we know about that India assumed the chairmanship of this Council of SCO RATS by the time of October 2021. So now this SCO, which is an 8-member economic and security bloc that India and Pakistan joined as a full-time back in 2017. And we all know about SCO, about its founding members. The founding members कौन-कौन है SCO का? It includes China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. So Central Asian countries के बाद we could see China and Russia is also a member of this SCO. Okay, so this SCO basically, which is formed of in this region, is basically started to strengthen the mutual trust, friendly relations, and cooperations amongst the member nations of the SCO. And here they tries to improve the coordination based on international experiences. So अभी यहाँ का जो areas of cooperation है ये बहुत सारे हैं. Okay, supposedly the youth and public are much more focused in this SCO. Also, the trainings of the professional staffs in the sphere of work with the youth is also very much of in necessity. Today, these SCO countries are directly cooperating in the field of scientific research, in the field of various number of research and developments. Also, in some number of economic and humanitarian initiatives, these countries are directly coming towards so that they could make a better place in this respective areas. So therefore, this SCO, which is a permanent intergovernmental international organization, and it's a Eurasian political, economic, and military organization, which is aiming to maintain peace, security, and stability in the region. तो ये SCO कब बना था? It was in 2001, which was where the SCO charter was signed by the time of 2002, and it entered into force by the time of 2003. Okay, तो पहले prior to the creation of SCO in 2001, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan were members of the Shanghai Five. Okay, which emerged in 1996.
ओके, तो ये 1996 में शंघाई 5 हुआ था, उसके बाद हम लोग ने ये कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बुझा है, बिकॉज आफ्टर फॉलोइंग द एक्सेशन ऑफ उज्बेकिस्तान टू द ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और द संघाई 5 वाज रीनेम्ड एज SCO. So we can see that till 2001 we would have called it as Shanghai 5. लेकिन उज्बेकिस्तान जब भी घुस गया in 2001, we could see that the Shanghai 5 was renamed as SCO. Or lately in 2017, we can see India and Pakistan being the full members of this SCO. Okay, and even we can see that by the time ईरान भी अभी चाह रहा है इन दिस SCO के मीटिंग्स में जाने के लिए, ईरान भी चाहता है कि दे ऑल्सो should be a permanent membership of this respective organization. Okay, so this organization is directly for this respective region, that is the Eurasian region, to enhance cooperation in various number of fields associated with this respective countries. तो अभी ये न्यूज में है क्योंकि अभी पाकिस्तान का जो एक टीम है ये क्लोजिंग सेरेमनी में कहाँ आएंगे, इंडिया आएंगे, विच इज डायरेक्टली थोड़ा बहुत न्यूज में रहता है क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी मिलिट्री को जनरली हम लोग अपने देश में नहीं बुलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस एंटी टेरर एक्सरसाइजेस दैट इज डायरेक्टली गोइंग ऑन in the country of India. Okay, that is the joint anti-terror exercises done by the regional anti-terrorist structures of the SCO. तो यहाँ पे अभी हम लोग को यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। तो ये अक्टूबर 8 से अक्टूबर 13 तक चल रहा है। तो अक्टूबर 13 तारीख को ये लोग कहाँ आएंगे, इन दिस कंट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो दैट्स द थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सो नोबल इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पे बताने लायक कुछ है नहीं, यहाँ पे बस we have to know about the person who is directly associated with this economic things for significantly improving or understanding the role of banks in the economy, particularly during financial crisis. The Civilservices Bank Prize in Economic Sciences for 2022 was awarded on October 10 to these three personalities, that is three American economists, that is Ban S. Bernanke, Douglas W. Diamond एंड फिलिप एच डीपी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तीन लोगों को यहाँ पे क्या मिला है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है। किस लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीन लोगों को अभी सम्मानित किया गया है अबाउट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो अभी चल रहा है ये सब प्राइजेस, ठीक है। तो दिस इज द मेन एट्रीब्यूट्स वेयर यू कैन सी दैट दिस थ्री पर्संस हैव डायरेक्टली मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेकिंग द इकोनॉमी फॉर अ betterment in some type of financial crises। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों नाम पूछ देगा और क्या रीजन है, किस बेसिस पे मिला है और किस फील्ड में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एड्रेस स्टिग्मा इन मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बताया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो वी कुड सी अबाउट दैट ये जो मेंटल हेल्थ है, ओके, दैट इज बेसिकली ये WHO के द्वारा डिफाइन किया गया है कि इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज हर ओन पोटेंशियल एंड हु कैन cope up with the normal stresses of life and can work productively and fruitfully and who is able to make a contribution to his or her community. So ये जो mental health है, it is a basic human right and it's crucial to personal, community as well as socio-economic development of this country. तो आज अगर हम लोग मेंटल हेल्थ का डिटर्मिनेंट्स को देखें, okay, so there are various number of determinants which directly says about the mental health. देखो, individual psychological and biological factors such as emotional skills, okay, genetics, substance use can make people more vulnerable to mental health problems. Even exposure to some of the unfavorable social, economic and geopolitical and environmental circumstances including poverty, violence, inequality, environmental deprivation also increases people's risks of experiencing mental health conditions. Also, we could see that the risks, for example, harsh parenting, physical punishments, is known to undermine child health and bullying in a leading risk factor for mental health conditions. And ये basically कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, सेंसिटिव पीरियड्स में होता है। ठीक है, जब हम लोग पुबर्टी के एक फेज में रहते हैं। So therefore, we today has gone for various number of steps to tackle such number of stigma that is associated with mental health, because यहाँ पे बोला गया है Lancet released a new report। तो ये Lancet के द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया है रिपोर्ट। तो ये Lancet, अभी पूछ दोगे सर व्हाट इज दिस Lancet, तो देखो ये Lancet Citizens Commission on Reimagining India's Health System was first of its kind participatory countrywide initiative which was done with respect to Lancet and
Lakshmi Mittal and Family Southeast Asia Institute associated with the Harvard University. एंड इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है टू एनेबल पार्टिसिपेटरी पब्लिक एंगेजमेंट्स टू डेवलप अ सिटीजंस ब्लूप्रिंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. ठीक है, और इनका 4 प्रिंसिपल्स होता है. ये जो कमीशन है, ये जो लैंसेट कमीशन है, इनका 4 प्रिंसिपल्स है. इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल द हेल्थ कंसर्न्स. सेकंड क्या है? प्रिवेंशन एंड लॉन्ग टर्म केयर आर द कीज. थर्ड क्या है? द कंसर्न शुड बी वेरी मच ऑफ फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड फॉर ऑल हेल्थ कॉस्ट. एंड फोर्थ इनका क्या है? एस्पायरिंग फॉर अ हेल्थ सिस्टम दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल हु एंजॉय द सेम इक्वालिटी. तो ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इवन विच इज डिस्कस्ड अंडर द एसडीजी गोल ऑफ 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, which is one of the most significant commitments to equitable quality healthcare for all. तो ये लैंसेट जो कमीशन है, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर अभी एनालिसिस कर रहे थे, रिपोर्ट दे रहे थे कि यहाँ पे बोला गया है कि 80% of state stigma and discrimination can be worse than the condition itself. And additionally, 90% of those surveyed felt that media could play a major role in reducing stigma. Then stigma can cause social exclusion and disempowerment of the people with mental health, leading to discrimination. तो आज we are seeing that the global initiatives are there today. जो मैंने अभी भी बोला है, World Mental Health Day, which is observed on 10th October. So 10th October को हम लोग ने क्या ऑर्गेनाइज किया था? Even yesterday only we have organized the World Mental Health Day with the overall objective of raising awareness about the mental health issues around the world and mobilizing even some of the efforts in support of mental health. क्योंकि आज कोई भी किसी का स्टिग्मा होता है, किसी का थोड़ा डिप्रेशन होता है, किसी का थोड़ा ये सब होता है जो उनको थोड़ा सब्स्टिट्यूट बना देते हैं किसी और चीज के लिए. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कोई भी थोड़ा ये डिप्रेशन होता है, कोई भी थोड़ा लाइक एबनॉर्मलिटीज दिखाते हैं, तो हम लोग सब पागल बोल देते हैं उनको. लेकिन एक्चुअली every mental patient is not a pagal. Every mental patient is cannot be said that he is directly lost his mind. तो यहाँ पे हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, एंड इसीलिए लोग रिपोर्ट करने के लिए डरते हैं, लोग कंसल्ट करने के लिए डरते हैं. So today even you can see about this WHO comprehensive mental action plan 2013 से 2020 which was adopted in the 66th World Health Assembly, which is directly seeing about that how the stigmas can be prevented so that the mental health conditions can also be prevented for a greater extent. क्योंकि आज हम लोग क्या देख रहे हैं? Because of such number of mental irregularities, the suicides are much more in this country. And suicide prevention is the global priority, and which is included even in the SDG goal of 3.4. So आज global initiative जो छोड़ो, इंडिया भी बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं about the national mental health program, which re-strategize about the burden of mental disorders and how this could be tackled with a better implementation programs. Also, we could see about the Mental Healthcare Act of 2017, which guarantees every affected persons who have got access to mental health care and treatment from services run or funded by the government. इसके बाद एक हेल्पलाइन शुरू किया गया था, किरण हेल्पलाइन, in 2020 by the Ministry of Social Justice and Empowerment, which is launched as a 24/7 toll-free helpline, which is known as Kiran, to provide support to the people facing anxiety, stress, depression, suicidal thoughts, and many other mental health concerns. इसके बाद एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मनोदर्पण. ओके, ये याद रखना सब चीज मैं बोल रहा हूं, जो चीज किरण हेल्पलाइन, मनोदर्पण, ये लिख के रख देना कहीं पे. These are very much useful must. कभी ना कभी ये सब बहुत यूजफुल हो जाएगा. You can quote such number of activities, initiatives in your answer writings. तो ये जो मनोदर्पण बोल रहा हूं अभी, it's an initiative of the Ministry of Education, which aim to provide psychological support to students, family members, and teachers for their mental health and well-being during the time of the COVID-19 pandemic. Even एक लॉन्च किया गया था मानस बोल के, MANAS, मानस. It's an app. It was launched in 2021. And the government of India launched this Manas, which is actually mental health and normalcy augmentation system. Mental health and normalcy augmentation system, Manas, which is to promote well-being across the age groups. And this Manas was endorsed as a national program by the Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council, जो हम लोग बोलते हैं PMSTIAC, Prime Minister's Science,
Technology and Innovation Advisory Council. So today it is very much essential that whatever be the challenges of promoting this mental health will be there, be it lack of resources, be it lack of financial resource allocations, be it the high public health burden, be it the loss to economy, out of pocket expenditure, be it the demographic dividend, be it the lack of awareness, be it the promote prone to abuse. All these things should be very much of looked forward, because we have to be very much of optimistic when we need to tackle such number of mental health conditions, because the government needs to do a good number of activities in increasing the resources, increasing the awareness, increasing more investments in public health care, increasing community partnership, and making an empathetic service delivery system through such number of programs which directly affects or which directly renovates the life of the people who is facing such number of trauma due to their day-to-day life schedules. तो ये यहाँ पे बोला गया है अबाउट द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की। यहाँ पे हम लोग का जो स्टिग्मास है, इस स्टिग्मास को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टैकल द स्टिग्मास सो एज टू कंट्रोल द मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, और ये क्यों आया न्यूज में, बिकॉज वी सेलिब्रेट October 10 एज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो ये था इन दिस डिस्कशन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये आ गया अपना मोटा सा नन्हा सा बच्चा, ओके, दैट इज किम जोंग उन, खतरा आदमी है। ठीक है, तो टुडे वी कुड सी दैट नॉर्थ कोरिया's recent flurry of missile tests demonstrated its ability to carry out strikes with tactical nuclear weapons। तो अभी क्या हो रहा है, यकीनन लाइक किम जोंग उन ने यहाँ पे क्यों टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल्स किए, देख सकते हो यहाँ पे बेटा हंस रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियर ड्रिल डायरेक्टली एक न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये क्यों है, बिकॉज यू नो दिस इज डायरेक्टली यू कैन सी ये नॉर्थ कोरिया है, दिस इज द होल एरिया ऑफ नॉर्थ कोरिया, दिस इज द होल एरिया ऑफ सेंट्रल साउथ कोरिया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत याद रखना, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये सेंट्रल माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये थोड़ा ये रिवर्स जो है ये भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, ये कोरियन स्ट्रेट है, ये येलो सी है। ठीक है, ये कोरियन बे है, ये सी ऑफ जापान है। ठीक है, तो ऑल चीज एंड व्हाट इन विच लोकेशन जापान इज सिचुएटेड इनसाइड ऑफ कोरिया, तो ये देख लेना टू द साउथ वेस्ट। ओके, तो टू द साउथ ईस्ट। ओके, सो यहाँ पे देख लेना कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, that also one another thing associated with North Korea and South Korea is this 38th parallel। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ये डिवाइड करते हैं दिस लाइन, दैट इज नोन एज द 38th parallel line। ओके, तो ये याद रखना। ओके, सो दिस इज द मेन कैटेगरी ऑफ डिवाइड बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउथ कोरिया विच इज ऑल्सो अ प्रो यूएस नेशन, ओके, और जापान भी क्या है, प्रो यूएस। तो यहाँ पे जितने भी इन लोग का जो पोर्ट्स है, जितने भी इन लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इन सब एरियाज में यूएस और साउथ कोरिया मिलकर थोड़ा नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं। ठीक है, नेवल ड्रिल्स मतलब नेवी में यहाँ पे अप्लाई किया गया है, वारशिप्स भेजा गया है यूएस के द्वारा। तो इसी के थोड़ा रिप्लाई में अपना जो किम जोंग उन है, ठीक है, ही डायरेक्टली ट्राइड टू डोज सम ऑफ द मिसाइल्स इन दिस इन देयर ओन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे अभी वो मिसाइल टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और अभी बोला गया है कि लाइक आई हैव गॉट द फ्रॉम प्योंगयांग में अगर रिलीज कर सकूं तो यहाँ पे सियोल यहाँ पे जाएगा, सियोल इज डायरेक्टली द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। ये जो पुसान है देयर मेजर पोर्ट, ओके, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, मेरा मिसाइल्स इतना कैपेबल है। ठीक है, तो अभी जो ये मिसाइल लॉन्च किए हैं, ये मिसाइल्स डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे टच करेंगे टू द वेरी पोर्ट एरियाज ऑफ द कंट्री ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर डायरेक्टली गोइंग ऑन, ओके, नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, व्हिच इज वेरी कॉमन फिनोमेना दैट वी कैन सी टुडे। ओके, तो अभी ये जो टैक्टिकल ड्रिल्स कर रहे हैं, न्यूक्लियर ड्रिल्स, ओके, टू सिमुलेट हिटिंग द साउथ एंड वेर ओवरसीन बाय दिस मैन in response to US-led joint military exercises. Okay, state media said the country has revised its nuclear laws last month to allow preemptive strikes. तो अगर यहाँ पे वो बोला गया है किम जोंग उन के द्वारा कि अब अगर यहाँ पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, then I would release this missiles which could directly hit the coast of South Korea. ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये ऐसे बोलते रहते थोड़ा बहुत ये सब लफड़ा चलता रहेगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है, just because of the response that US, South Korea and Japan is directly doing in this area of Sea of Japan in this Korean Strait। ठीक है, तो इसी का ही रेस्पॉन्स में अभी यहाँ पे डायरेक्टली ये मिसाइल टेस्ट किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आता है, स्पेस इकोनॉमी में टच 13 बिलियन बाय 2025। ओके, तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि लाइक Indian space economy is set to reach $13 billion by 2025, according to a joint report prepared by the EY and the Indian Space Association। ठीक है, तो अभी मैं अगर बोलूँ about this segment with the satellite launch services segments which set to witness the fastest growth due to increasing private participation according to some of the reports made by the Indian Space Association। ठीक है, तो आज हम लोग का प्राइवेट जो एंटिटीज है,
ये लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहाँ पे, इन दिस एरिया ऑफ स्पेस इकोनॉमी. सो इंडियन स्पेस इकोनॉमी व्हिच वाज पैक्ड एट $9.6 बिलियन. ओके, $9.6 बिलियन कब था, अराउंड 2020. तो 2020 में we had seen $9.6 billion in 2020 and which is expected to reach around $13 billion by 2025. ठीक है. और today you could see about that in the growing category, some engines of growth are the small satellites, because the growing demand for smaller satellites is set to boost the satellite manufacturing sector in our country. And today we have the capability to launch some of the various satellites of other countries with a very precision as well as at a very lesser price. Okay, so the availability of this low cost satellite launch vehicles coupled with mass production will lead to a demand from customers around the world, and Indian private companies are also looking to exploit the space industry by using innovative technologies, which will be a key to attracting global startups working in the space sector and help to incubate space tech companies in India. So today we have seen that India has over 100 space tech startups with investments in the segments touching to around $68 billion in 2021. And today, several companies are utilizing some of the cutting-edge technologies to develop innovative launches and have built considerable expertise around the launch of all the satellites, be it in the lower Earth zone, okay, be it in the middle Earth orbit as well as the geostationary Earth orbit. तो यहाँ पे देख सकते हो ये अर्थ का जो क्लोजेस्ट में होता है वो LEO है, ठीक है. जो ये है that is the blue line, you can see this is the MEO, middle earth orbit, and जो यहाँ पे है that is the dark blue color line, violet line, ये हम लोग का geostationary orbit है. ठीक है. तो आज we could see that the launch segment is fast becoming a key focus area for startups and small and medium businesses, which will drive the innovation agenda and make use of new revenue opportunities which will be coming in the near future. ओके, तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा हम लोग का लॉन्च किया गया है. स्पेस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग के यहाँ पे 100 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, who is directly creating a mass number of investments to around $68 million in only 2021. तो अभी तक तो और बढ़ गया होगा. So you could see that today the next economy which will directly push the economy of India to a goal of a 5 trillion economy by 2025 will be a role of the space economy. ठीक है. तो यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि हाउ इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज ग्लोइंग इन इस पर्सपेक्ट. ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आता है, दैट इज द लास्ट एडिटोरियल में, बिल्डिंग रेजिलिएंट मिनरल सप्लाई चेन. ओके, तो यहाँ पे अबाउट बोला गया है अबाउट द रेजिलिएंट बिल्डिंग सप्लाई चेन्स की हम लोग कैसे वी कुड सी अबाउट द मिनरल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बिकॉज अभी रिसेंटली इन आवर इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी even exhorted the country to pursue Atmanirbhar Bharata in energy by focusing on clean energy technologies. And ये clean energy कब बन सकता है? When we have got a secure access to key critical minerals such as lithium, cobalt, nickel, and all such number of rare earth materials, which is critical for building resilient and indigenous supply chains for clean energy technologies. So today, if you see about this critical minerals, तो critical minerals होता क्या है? These are elements that are the building blocks of essential modern day technologies, which are at the risk of supply chains disruptions. So today, the list of critical minerals includes graphite, lithium, cobalt. ये बहुत important है, and which are a key mineral for making computer chips, solar panels, batteries. बहुत important. And also we could see that these critical elements are very much important in aerospace, communication, defense industries, which rely on such minerals for manufacturing fighter jets, drones, radio sets, and various other critical equipments. So therefore, in this arena, today we could see that the country is directly going with various number of critical resources as well as the rare earth metals. तो बोल सकते हो कि what is rare earth metal? So rare earth metal or rare earth elements are a set of 17 metallic elements, which includes 15 lanthanides on the periodic table plus scandium and thorium. तो जान सकते हो हम लोग पहले periodic tables पढ़े थे. And these rare earth metals are essentially part of many high-tech devices, and they have got a wide range of applications. आज मैं अगर बोलूं about some of the significant defense applications, which includes electronic displays,
गाइडेंस सिस्टम्स, लेजर्स, रडार्स, सोनार सिस्टम, ये सब में क्या यूज होता है? रेयर अर्थ मेटल्स यूज होता है. So these rare earth minerals which are named as neodymium, ठीक है, then this praseodymium, okay, then this dysprosium, which are crucial for the manufacture of magnets which are used in industries and even in some of the various clean sources of energy, be it wind turbines, be it electric cars, सब में यूज होता है. तो आज ये रेयर अर्थ मेटल्स का, क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज्यादा रोल है. इलेक्ट्रॉनिक्स में रोल है, इन डिफेंस सेक्टर इट हैज गॉट रोल्स. सोलर पैनल्स जो रिन्यूएबल सोर्सेस का एक मेन टारगेट है, उसमें यूज है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टू गो फॉर सिरामिक्स, पिगमेंट्स, ग्लासवेयर, मेटल अलॉयज, सब में यूज होता है. मेडिकल साइंस में यूज होता है. पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स, एक्सरे ट्यूब्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, देन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑल सब में यूज होता है ये सब. फिर लेजर टेक्नोलॉजी, if I go with the technology, laser technology, optical glass fiber technology, nuclear fuel rods, radar detection devices, nuclear batteries, high temperature superconductors, ये सब जगह में we are using such number of rare earth metals. So today if you will be very much glad to know that metals such as cadmium, lead are often used in manufacturing plastic and over time can enter coastal waters. So you'll be shocked to know that this number of minerals which are used for manufacturing the plastics which are polluting the atmosphere, they are also getting released. They are also releasing a good amount of minerals. They are also getting released a good number of harmful chemicals which is very much exposed to water as well as the environment. So therefore the challenges which we have towards the critical minerals, towards these rare earth minerals, should be solved at the earliest. Therefore we can see that Indian government is directly taking some of the great number of strategies so as to source some of the strategic minerals. आज मैं अगर बोलूं about the काबिल, ओके, यहाँ पे देख सकते हो about the काबिल. काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, and its mandate is to secure mineral supply for domestic market. So काबिल joint venture में कर रहे किसके साथ? तो काबिल, where a joint venture is set up with the participation of 3 central public sector enterprises, namely the NALCO, that is the aluminum company, ACL, that is the Hindustan Copper Limited, and Mineral Exploration Company Limited, which is known as MECL. तो काबिल which is the खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल आज किन किन के साथ टर्म्स कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं? नाल्को के साथ कर रहे हैं एल्यूमिनियम, ओके, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ कर रहे हैं, और MECL के साथ कर रहे हैं, which is known as the Mineral Exploration Company Limited. And a very objective of this number of ventures is to constitute Kabil to ensure a consistent supply of critical and strategic minerals to Indian domestic market. And therefore, we have seen about various suggestions by various agencies so as to make some of the greater coordination from different stakeholders. So therefore, today, when it's a time of crisis, where we could see that besides Ukraine, other potential geopolitical flashpoints also exist against a backdrop of dwindling multilateral cooperation, India must act immediately and decisively to mitigate this risk to its energy security. क्योंकि दो हम लोग के पास आज हम लोग का मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, बट इट इज नॉट सेल्फ सप्लाइज. आज अफगानिस्तान के पास लिथियम बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए थ्रू बार्टर सिस्टम दे आर डूइंग व्हाट? रशिया के साथ बार्टर सिस्टम कर रहे हैं अफगानिस्तान आज, तालिबानीज, क्योंकि उनका तो सब अकाउंट्स फ्रीज हो चुका है. तो आज व्हाट दे आर डूइंग? They are terming with this country of Russia so as to procure crude oil in exchange of lithium so that they could make some of the lithium batteries well. तो लिथियम कहां से मिल रहा है हम लोग को? अफगानिस्तान में, बहुत बड़ा खनिज है वहां पे. सो इसीलिए अभी देख सकते हैं कि हम लोग का जो ये प्राइसेस इधर का उधर हो रहा है, ओके, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अभी हम लोग का डिसमल वेरिएबल्स हो रहा है, which is challenging on several counts. तो ये डायरेक्टली आ रहा है just because of the situation that the geopolitics is directly happening. So आज even you can see because of the Ukraine conflict, because Russia is the main exporter of such number of rare earth minerals. अफगानिस्तान में ही देख लो, उन लोग से आराम से लेके आते, अगर वहां पे सेटलमेंट होता, वहां पे पीसफुलनेस होता, जो उन लोग का लिथियम डिपॉजिट्स है. तो ये सब नहीं हो रहा है. तो therefore we could see that we should be very much resilient in the supply chains, because all these minerals, be it the rare earth, be it the critical earth,
All these minerals are very much essential for our domestic industries as well as domestic factories for our upgradations. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Without these minerals, no respective organization can function well, no respective manufacturing sector can do well in this country. तो यहाँ पे वही चीज डिस्कस किया गया है with this writer Arjun Dutt, who is a senior programmer lead at the Center of Energy Finance at the Council of Energy Environmental Water, which is directly a research organization. ओके तो यहाँ पे वही राइटर के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि वी शुड एटलीस्ट मेक सम ऑफ द रेजिलिएंट मिनरल सप्लाई चेन. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी कुड सी अबाउट. ओके सो यहाँ पे आप लोग के लिए 5 क्वेश्चंस है एमसीक्यूज. डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस. ओके सो also you have got a mains question, so you will get the answers tomorrow alongside the pdf. okay तो जैसे यहाँ पे कल का क्वेश्चंस मिला है आप लोग को, ठीक है, आंसर्स, तो ऑलरेडी यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, okay which is directly given in the link given below. तो चलो कल मिलते हैं. तो फिर टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद.